Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is lecture number 16 from English Grammar Tree, and in today's lecture we will discuss the two kinds of finite verb, transitive verbs and intransitive verbs. First of all, the definition of transitive verbs and how can we recognize a transitive verb. Verbs can be transitive or intransitive, finite verbs, okay? Because non-finite verbs do not have further kinds, but finite verbs are transitive or intransitive. So transitive verbs, first of all, definition: a verb that takes an object is a transitive verb, right? Every sentence has a subject and a verb, and sometimes after verb there comes object. Means the structure of a sentence is subject plus verb and plus object. Okay, if there is object after the verb or the verb needs an object, then that verb will be transitive verb. Okay, the action transits from adject of the action transits from subject to object. जब एक काम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के ऊपर वाक़ हो रहा हो तो वो जो काम होता है, वो जो वर्ब होता है, वो एक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, राइट? इन सिंपल आप ये समझें कैसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, they are called transitive verbs. The action or event involves another person or thing referred to as object. Okay, एक कोई एक्शन या कोई ऐसा वाक्य या चीज़ जो दूसरे पर्सन या चीज़ के साथ इन्वॉल्व होती है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. इन अदर वर्ड्स के एक्शन जिस चीज़ के ऊपर हो रहा होता है, या डूअर ऑफ एक्शन जिस काम को, जिस चीज़ को कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जिसको हम उर्दू में मफूल कहते हैं. फाइल, फेल एंड मफूल, जिस पे काम वाक़ होता है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट. ओके, एग्जांपल्स: he likes cricket. He subject, likes verb, cricket is object. It means this verb likes has an object. Okay, so this is likes is transitive verb. He bought a bar. He subject, bar verb, a bar is object, so bought is also transitive verb. The word cricket is object of the transitive verb likes, and the word bar is, oh sorry, this is bat, okay, not bar, bat. Bat is object of the transitive verb bought. Okay. A transitive verb shows an action which passes from doer or the subject to object. Okay, एक ऐसा एक्शन जो डूअर ऑफ एक्शन यानी फाइल सब्जेक्ट से पास होकर जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट एक्शन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. एक्शन ट्रांजिट्स होता है. शी रोट अ लेटर इज ऑब्जेक्ट ऑफ रोट इज वर्ब. ही हैड हिज ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट कर लिया था. हैड इज वर्ब, breakfast is object. I play football. Football is object of play. They bought a big packet. Big packet is object of bought. Buys. So buy, play, have, has, or write. These are transitive verbs. Now the exercise will be done by you. Fill in the blanks with the appropriate transitive verbs. Okay, you will put transitive verbs in blank spaces from this. Let me solve first example for you. Jane, her household chores. Chores mean daily routine or routine job. Okay, routine task, रोजमर्रा के काम. Household chores,
Household chores mean घरेलू काम. Okay. Jane is name of a woman, so we can write Jane finished her household chores. Jane ने अपने घर के काम खत्म किए. Finished is a verb, transitive verb, and her household chores is object of that verb. Similarly, her suitcase. She locked her suitcase. उसने अपने suitcase को lock किया. She locked. किस चीज को किया? Her suitcase. Object. So this is locked is also transitive verb. Okay. Do the rest of examples. See the next exercise. Below is the list of transitive verbs that take two objects. The direct object relates to the verb and is affected by the action of verb. An indirect object indicates the person who benefits from an action or receiving something as a result. Okay. Some verbs like these verbs have been given. These verbs have two objects. Okay. Some verbs have two objects. Example, look the example. He, subject, asked verb, उसने पूछा. Her, उससे पूछा. So this is one first object. A question, क्या पूछा? Question पूछा. Second object. फिर ask के दो object आते हैं. Her, जिससे पूछा गया है, और क्या पूछा गया है. तो डायरेक्टली एक्शन जिस पे हो रहा होता है, ओके, पूछने का अमल किस से रिलेटेड है? क्वेश्चन से. क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, और जो शख्स इन्वॉल्व होता है जिससे वो क्वेश्चन किया जा रहा है, वो है हर. दिस विल बी कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विल बी दिस वन अपॉन विच द एक्शन इज बीइंग टेकन. ओके, जिस पे एक्शन हो रहा है, जिसको एक्शन अपना इफेक्ट कर रहा है, ओके, वो डायरेक्ट होता है. और जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, कि पर्सन होगा, वो इनडायरेक्ट होता है. लाइक द अदर एग्जांपल, शी गेव हिम अ पीस ऑफ हर माइंड. ओके, शी गेव हिम, उसने उसको दिया. गिव, क्या चीज दी है? अ पीस ऑफ हर माइंड. अपनी मीन्स के अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपना आइडिया दिया. ओके, तो पीस ऑफ माइंड दिया. किसको दिया? हिम. हिम इनडायरेक्ट हो गया. जो चीज दी गई है, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द गवर्नमेंट ऑफर्ड द विक्टिम्स सम रिलीफ. गवर्नमेंट ने ऑफर किया है. क्या चीज ऑफर की है? सम रिलीफ. डायरेक्ट एक्शन जो जिस पे हो रहा है वो ये है, लोगों को सहूलत दिया, रिलीफ दिया है. ओके, किसको दिया है? विक्टिम्स. विक्टिम्स जो मुतासरीन थे, इफेक्टेड पीपल, फॉर एग्जांपल इफेक्टेड बाय earthquake or affected by any incident, flood, etc. His mother promised him a birthday gift. His mother subject, promise, उसने वादा किया. क्या वादा किया? A birthday gift. This is direct object. किससे किया? Him, उससे. Indirect. So persons are indirect, and upon which the action is happening, that is direct object. Okay. Now draw a table like the above one and split the given sentences in the same way. Okay, you will split these sentences into subject, verb, indirect object, and direct object. For example, first one, he promised. He subject, verb promised, them indirect object. क्या चीज promise किया? An outing. outing का promise किया उसने. outing is direct object. Hiba subject, gave verb, me indirect, क्या दिया? A watch, direct. Okay. Similarly, you will do rest of the exercise. Next kind is intransitive verb. A verb that has no object is intransitive verb. The simple definition. Okay, जिसका object होता है, इसको object की जरूरत ही नहीं होती. Okay, that is called intransitive object. It shows an action without an object. Okay, without an object, or express a state of being. हालत को बयान करता है. is or am वगैरह के साथ आता है. Only the performer of the action, the subject, and the action, the verb, are mentioned. एक performer of action होता है subject, और एक action verb होता है object नहीं. For example,
He laughs often. He subject, laugh verb. वो हंसता है. Often, often is adverb. अक्सर. Okay. इसको ऑब्जेक्ट नहीं है, ना ही इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. वो हंसता है. वो क्या हंसता है? व्हाट के साथ हम इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं. ओके. An intransitive verb can be followed by a subject complement. इसके आखिर में subject complement आ सकता है. Or prepositional phrase or an adverb or an adverbial particle, an element that tells us about the time, manner, etc., action or verb. Okay. Simply saying, ये कहना ये चाहते हैं कि ये जो वर्ब होता है इंट्रांजिटिव, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता. अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो फिर क्या आता है? अब यहाँ पे हमने देखा है इट वॉज एडवर्ब आ जाता है. कभी कभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाता है जब वर्ब इज और एम या लिंकिंग वर्ब होते हैं, जब उनके बाद आने वाला जो वर्ड होता है या फ्रेज होता है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ओके. प्रेपोजिशनल फ्रेज आ सकता है. फ्रेज अभी हमने नहीं पढ़े, इसको पढ़ेंगे. एडवर्ब आ सकता है. एडवर्बियल पार्टिकल आ सकता है. ओके. एग्जाम्पल, सुहेल इज माई ब्रदर. सुहेल सब्जेक्ट इज वर्ब, लिंकिंग वर्ब. ओके. लिंकिंग वर्ब होते हैं, इंट्रांजिटिव होते हैं. अच्छा, अब सुहेल इज, सुहेल है, क्या चीज है? माई ब्रदर. व्हाट इज माई ब्रदर? दिस इज कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. इज, एम और वाज वर्ब जब ये खुद वर्ब के तौर पे आ जाएं, हेल्पिंग वर्ब ना हो, खुद वर्ब हो, ये लिंकिंग वर्ब इन्हें हम कहते हैं, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ड होता है या फ्रेज होता है उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. ओके. सो दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. माई अंकल इज, माई अंकल सब्जेक्ट इज कमिंग. हियर is used as helping verb, coming के साथ है. मेन वर्ब इज कमिंग. टू डिनर, prepositional phrase. ओके. यहाँ पे आ जाइए, काम ऑन. ओके. माई अंकल इज कमिंग टू डिनर. मेरे अंकल आ रहे हैं टू डिनर. ओके. टू के साथ आया है नाउन से पहले. दिस इज preposition, prepositional phrase इसको कहेंगे. then we will read it after. Okay. The maid comes early. Maid subject, comes आता है, early adverb of time. adverb है, हुआ है कि वो आता है, लेकिन इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं होता. The train went past. Train subject went and past is adverbial particle. एडवर्बियल पार्टिकल्स, एक होता है एडवर्ब और एक होता है एडवर्बियल पार्टिकल फ्रॉम पार्ट. ओके. उसका यूँ समझिए कि एक छोटा सा स्मॉल पार्ट ऑफ एडवर्ब. एडवर्बियल पार्टिकल्स आर ग्रुप ऑफ एडवर्ब्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर ऑन. इनकी अपनी एक सिफात होती हैं और इनके मीनिंग्स होते हैं. जैसे अप, ये अमूमन वर्ब के बाद आते हैं या सेंटेंस के एंड पे आते हैं, इसलिए ये प्रेपोजिशंस का काम नहीं करते, यहाँ पे ये एडवर्ब का काम करते हैं. ओके. फॉर एग्जांपल, अप, स्टैंड अप. ओके. इन स्टैंड अप, अप इज एडवर्ब और एडवर्बियल पार्टिकल, ऊपर के माना में, यानी कि ऊपर खड़े हो जाओ. डाउन, सिट डाउन. इन, कम इन. मे आई कम इन, कम इन. इन कम के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे इन के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा. ओके. इन पे खत्म हो रहा है सेंटेंस, इसलिए इन एडवर्ब कहलाएगा. अंदर के माना में, इनसाइड, आउट, गेट आउट, बाहर निकल जाओ. आउट जो है बाहर के माना में. ऑन, ऑफ, अवे एंड बैक. ओके. ये सेंटेंस के जब आखिर में आते हैं, इनके बाद नाउन ना हो, तो दीज आर कॉल्ड एडवर्बियल पार्टिकल्स. लेकिन इनके बाद अगर नाउन आ जाए तो फिर ये प्रेपोजिशंस बन जाती हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सिट ऑन द चेयर. ऑन द चेयर. अब यहाँ पे ऑन जो है वो एज preposition है. ओके. Okay. Add suitable complements to the following sentences according to the instructions given in the brackets. Brackets में जो instructions दी गई हैं उनके मुताबिक complement लगाना है. They came, वो आए, adverb.
अब इनमें से हमने एडवर्ब लगाना है जिसके साथ इसका मीनिंग ठीक बन सके. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन पुट हियर लेट. दे केम लेट. वो आए लेट, देर से. लेट इज adverb of time, showing time. Okay, देर से है. Similarly, you will do rest of the exercises. Okay, it is enough for this chapter. Okay, you will write this chapter on your notebooks. You will write definition of transitive verbs, then intransitive verbs. Write them with examples. Okay, as much examples you can give. Provide examples. You will do exercises on your notebooks. Okay, memorize this chapter very well. Okay, thank you.